सुबह के 6 बजे हैं, एकदम पिच डार्क है. मैं बैल्कनी में अकेला खड़ा हूँ और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बिजार, बिल्कुल बिजार. पर एज़ यूजुअल मेरी नींद सुबह 5 बजे खुल गई थी, तो मैं 5 बजे उठ गया. थोड़ी देर न्यूज़ पढ़ी, फ्रेश एंड अप, चेंज क्लोथ्स. प्लान इज़ टू रीच द बीच, अ न्यू बीच टुडे, जहाँ पे जाके हम सनराइज़ के टाइम पे शूट करेंगे. पर वेदर इज़ रियली नाइस. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर. क्वाइट नाइस. आई डिडंट थिंक कि कोंकण में मौसम इतना अच्छा होगा, पर बहुत प्लेजेंट है. So that's good. सुप्रभात एक और बार. अभी 7 बजे एंड वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड ऑन आवर वे टू द फर्स्ट बीच टुडे, व्हिच इज कॉल्ड द फल्या फोंडा बीच or something like that. I have no idea what that means. But Falya Fonda beach is where we are going. It's a little bit bigger beach than the beach that we went to yesterday. But not many people go there still. हमारा प्लान था कि सनराइज़ तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे. But right now we are a little bit lost. तो हम थोड़ा गाँव में घूम रहे हैं, trying to figure out the way to reach the beach. But the light is beautiful. And the view from here is also really, really, really beautiful. So I'll show you that and then we'll start off ahead towards the beach once again. So we are walking towards the Falya Fonda beach. और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही सुंदर से गांव से. Very typical Konkani village. Really beautiful in the morning. बहुत कम लोग उठे हैं यहाँ पे. Seems really, really quiet. I'm the only noisy one right now. Found somebody. So we are finally at Falya Fonda beach and the beach is stunning. काफ़ी बड़ा बीच है एक्चुअली कल के बीच के मुकाबले. बहुत सारा स्पेस है टू वॉक अराउंड एंड सी द प्लेस. बट फ्रैंकली हमने सुबह आके सबसे पहले ड्रोन उड़ाया, took some nice shots and now that part is done, the batteries are over, we're kind of chilling on the beach. So this beach and a few other beaches like this in the neighborhood are also nesting grounds for the turtles of the Konkan region. These are olive ridley turtles generally. तो काफ़ी protection effort चल रहा है यहाँ पे और बहुत सारे areas में for these turtles. So even here you'll see a lot of posters which talk about conservation of turtles and how we should not harm them. This is the time of the year जब mother turtles would have come and laid their eggs. और कुछ time बाद hatchlings will go back into the sea. You need a lot of support from the farmers, from the villagers here as well to make sure that the tiny little ones reach the sea, and they often support them by kind of actually putting them into the water. As always, conservation is a effort which is successful only when we all come together. यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है. Hopefully, we humans will be able to contribute towards making this conservation effort successful.
So we are back from a morning excursion and look at what's happening. Poonam is working. It's a Sunday, right? It's a Sunday and she's working. I think women in our country work way too much. I think men just don't work. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है. हम सब सुबह मस्ती करके आए. वैसे आज Sunday है. Why are you working? Why are you working? I have to work. I have to finish something. बहुत काम करती लड़की. So, दूसरे दिन की शुरुआत तो अच्छी सी सुबह हो ही चुकी है और अब हम जा रहे हैं तारकर्ली की ओर, विच इज़ लाइक द हाई पॉइंट ऑफ आवर ट्रिप आई थिंक. वहाँ पे दियोबाग बीच करके एक बीच है जहाँ पे हमारा एक बहुत ही फैंसी रिजॉर्ट है विच एक्चुअली बिलोंग्स टू अमित्स वेरी क्लोज फ्रेंड. फॉर नाउ बहुत गर्मी में जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंड 2 घंटे बाद विल रीच समवेयर. Scorching heat, like we are burning somewhere around 30 degrees, 30 plus. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था एंड विच केम एज अ सरप्राइज. यहाँ पे अपना एक एयरपोर्ट भी है. उस एयरपोर्ट का नाम है चिपी एयरपोर्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू वेयर वी वर स्टेइंग एक्चुअली. कल हमने क्रॉस किया था उस एरिया को. सो एयरपोर्ट है यहाँ पे. मुंबई से फ्लाइट्स भी आती हैं. आई मीन फ्रीक्वेंसी इज़ अ बिट यू हैव टू चेक बिफोर यू कम एक्चुअली. दैट्स द थिंग. हफ्ते में 1 या 2 बार फ्लाइट्स आती है. दिन के टाइम पे 1 बजे फ्लाइट आती है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर फ्रॉम मुंबई you can actually fly in if you plan your trip better. So you'll save 8 hours of travel time or something like that. अभी जस्ट हम दियोबाग पहुंच गए बीच पे और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत से रिजॉर्ट में रह रहे हैं जिसका नाम है रिवर कोस्ट रिजॉर्ट. रिजॉर्ट एक्चुअली अमित के एक दोस्त का है, शुभम का, एंड ही स्टार्टेड दिस ओनली अबाउट 3-4 months बैक. तो काफ़ी नया प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी जगह है. वी हैव दिस रियली ब्यूटीफुल कैबिन लाइक हट, वेरी यूरोपियन स्टाइल, बिग ग्लास विंडो विच ओपन्स टू द रिवर ऑन दिस साइड. इट्स परफेक्ट व्यू. हम कल भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह रहे थे. काफी लोकल सा एक्सपीरियंस था. किसी के घर में रह रहे थे एंड नाउ वी आर लिविंग इन दिस नाइस लग्जूरियस प्लेस. सो काफी डिफरेंस है. तो आज हम काफी चिल करने वाले हैं. दिन में वी विल गो आउट एंड एक्सप्लोर अ फोर्ट विच इज इन द मिडल ऑफ द सी. फोर्ट के बारे में बताएंगे व्हेन वी रीच द फोर्ट. फॉर नाउ लेट्स फाइंड अ वे टू गेट सम नाइस चाय. So it's lunch time and we have come to this really interesting place called Chimney, which means bird in Marathi. So we'll eat some birds here. I mean, not me, I'm vegetarian, but these guys will eat some birds here. वेज थाली रेडी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है इसका. क्या हो सकता है इसके अंदर? क्या हो सकता है? क्या देखते हैं. बहुत बढ़िया डिश है इसके अंदर. मालवानी राइस विद गोभी, मटकी, सोलकड़ी, गुलाब जामुन. अरे ये स्वीट तो मेरा है. स्वीट तुम्हारा कौन सा स्वीट है? ये क्या है? तुम्हें भी मिलेगा अपना स्वीट खाना है सबको. नहीं यही सही है मेरे को. So post lunch we have come to Malwan city, actually on the Malwan beach, and we are going to a fort. ये फोर्ट शिवाजी ने बनाया है और ये पानी के बीच में है. As we go there, we will explain actually more about the fort. पर अभी जाके ढूंढते हैं कि टिकट कहाँ से लेना है and how do we actually go take the boat. Some of you must have guessed it already. हम लोग जा रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट पे जो मालवन बीच से ईजिली एक्सेसिबल है. यहाँ से आप बोट ले सकते हैं वहाँ जाने के लिए. एक्चुअली दैट्स द ओनली वे टू रीच द फोर्ट. टेक अ बोट. 100 रुपये का किराया होता है. टेक्स अबाउट 10 minutes टू रीच द कोस्ट. रात को वहाँ रुकना संभव नहीं है. सो यू हैव टू कम बैक द सेम डे. एंड द लास्ट बोट कम्स बैक फ्रॉम देयर एट अराउंड 5:36 PM. आई गेस द टाइम चेंजेस अ लिटिल बिट एवरी डे बट दैट्स द यूजुअल टाइम अराउंड सनसेट. तो बोट आपको लेके जाती है वहाँ पे और बोट में आपको 1 घंटा मिलता है टू सी द प्लेस. एंड आफ्टर 1 hour यू हैव टू कैच द सेम बोट एंड कम बैक टू द मालवन बीच.
अभी भी हम वही करेंगे, करीब 4:30 बज रहे हैं, एंड आई थिंक विल बी बैक बाई 6 o'clock और समथिंग टुडे. So what is Sindhudurg Fort and why is it so important? Now Sindhudurg Fort technically translates into Sindhu Fort and Fort. So it's enough to just say Sindhudurg because वो दुर्ग का मतलब in Marathi और in Hindi is also fort. तो ये फोर्ट एक्चुअली 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने बनवाया था और इसको बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था. ये समय था जब बहुत सारे फॉरेन पावर्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर्स वर कमिंग टू इंडिया टू ट्रेड विद इंडिया. So this fort was kind of built to control their influence, their spread in this region. Of course, also Siddhis were very strong, so it was also made to kind of prevent the spread of Siddhis from Janjira side to this region. It's also a very popular tourist destination for people who come towards the Malwan side. तो आप बीच से बहुत सारी activities करके at the end of the day you can come here, and I think it's a really peaceful place to come and just get nice breeze and learn a little bit about the history of this region. सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है और हमारा यहाँ पे समय समाप्त हो रहा है. पर जाने से पहले हम देखना चाहते हैं जहाँ पे महारानी नहाया करती थी, उस बीच पे जाके. इट्स कॉल्ड क्वींस बीच. वेरी गुड वेंटेज पॉइंट फ्रॉम एवरीवेयर, सो विल गो एंड सी क्वींस बीच. वी डोंट नो विच क्वीन दिस वाज, बट शी वाज अ वेरी फेमस क्वीन. इवन अमित नोज अबाउट हर. हाउ डू वी गो अमित? अमित, क्वीन के बीच में जाते कैसे? डू हैव टू जंप? Poonam, what do you say? Are you excited about Queen's Beach? Yeah. Why are you so excited about Queen's Beach? Because I want to see what It's not King's like. Beach. She's excited anyway. Maybe because her husband said it's Queen's Beach, so she wants to see why her husband is so interested. कैसे जाते हैं पर? नहीं, क्योंकि बीच तो यहाँ पर है. Woohoo! So finally we made it to Queen's Beach. छोटू सा बीच है, महारानी का बीच है, स्पेशल बीच है. ज़्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, so it's kind of empty. Also it's time to go back. हमारी बोट के जाने का समय हो गया, so we can't spend much time here. और हम यहाँ छप भी नहीं कर सकते. हाँ, I wonder यहाँ पे वो सुबह नहाने आते थे, शाम को नहाने आते थे. In any case, बीच हमने देख लिया, which is pretty exciting. Alright, so Queen's Beach तो हो गया, but we are actually running late. Late for catching our boat. As per the time, हमारी बोट जा चुकी है 10 मिनट पहले, so we are late. I hope there's still some more boats that can take us back. Apparently, you can't actually stay on in the night at the Sindhudurg Fort, so there are no hotels, no homestays, nowhere you can stay actually. So it's not allowed for tourists to stay overnight. Of course, if you have a friend or a relative here, you can of course come and stay with them, but otherwise you can't stay overnight. I would have loved to stay here and सुबह आके यहाँ पे घूमता, but unfortunately that's not somehow. तो हमें जाना पड़ेगा वापस and it's time to head back. So finally we're heading back towards Malwan Beach in another boat. काफ़ी लेट है हम लोग अपनी बोट के टाइम से.
like 45 minutes late, but I'm sure we'll find a boat. यहाँ पे ऊपर शिवाजी के हाथ के और पाँव के निशान भी है. Unfortunately, we tried but couldn't find them. So if you are coming here, maybe have a look and let me know if you find them. But for us, I think our day is kind of over. We'll go find some chai. Chai maybe, guys. Chai? Anybody for chai? Yes. Chai? Yes, okay. चाहिए. So friends want chai and so we'll go and have chai. तो आज का भोजन हो चुका है. हमने खाया है काजू उसल, समथिंग आई हैड नो आइडिया इवन एग्जिस्टेड, एंड चावल की भाकरी. इट वाज गुड. पर अभी ये लोग बहुत ख़तरनाक सी एक चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, which is against my principles. But anyway, I'll still show you what's happening. Basically, we are fishing. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है क्योंकि यहाँ पे रिवर और समुंदर का मिलन होता है. और जब हाई टाइड आती है तब समुंदर का पानी रिवर के अंदर आ जाता है. एंड अलॉन्ग विद दैट वाटर फिश ऑल्सो कम्स. तो रात के टाइम पे ऐसा हो रहा है आजकल. 10:15 साढ़े 10 बजे के बाद शुरू हो जाती है. तो अभी फिशिंग कर रहे हैं सब लोग. हम भी जाके देखते हैं फिशिंग को. Amit is gonna join and kill and murder a few fishes, but the murderer is here. But I'll go collect evidence. Let's go. Poonam is not. She's just gonna eat tomorrow. एकदम फुल आड़ा टेढ़ा मारते हैं. आड़ा टेढ़ा.